Good morning, students. Welcome. So, today we are going to start with the new chapter of science, stars and the solar system, which is chapter number 17 of your textbook. And this is part 1 of the chapter. So, let's see. First, let's see what is night sky. Have you ever seen night में कभी sky में देखा है क्या कैसा दिखता है? The various celestial objects which we can see easily in the night sky are star, planets, moon and meteors, or we can say shooting stars. All these you can see in the night sky. An important characteristic of stars is that they appear to twinkle in the sky. Do you see the twinkling stars? Yes, it is the most important characteristics of the stars, that is twinkling. Planets do not twinkle because they are much more nearer to the earth than the stars. They are much nearer to the earth compared to stars and they do not twinkle. Yes. Moon is the most prominent object which we can see in the night sky. Prominent means एकदम चमकता हुआ bright object है. Prominent means distinguish. Easily आप उसे पहचान सकते हैं. And this can be seen in the night sky. Yes students, universe. What is universe? The vast space जिसे हम अंतरिक्ष भी कहते हैं हिंदी में, which includes everything that exists on the earth and around it is called universe. The branch of science that deals with the study of heavenly bodies is called astronomy. The branch of science which deal with all these heavenly bodies, or we can also call them celestial objects, is known as astronomy. We call that branch as astronomy. And people who study about the universe are called astronomers. और जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं उन्हें हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. यू माइट बी नोइंग दैट, है ना, सुना होगा एस्ट्रोनॉमी क्या होता है. और काफ़ी सारी चीज़ें पहले जो ज़माने में लोग होते थे इन एंशिएंट इंडिया, आवर एंसेस्टर्स परफॉर्म मेथोडिकल ऑब्जर्वेशंस ऑफ स्काई को ऑब्जर्व करते थे. देयर नॉलेज ऑफ एस्ट्रोनॉमी वॉज वेरी हाई एडवांस्ड फॉर देयर टाइम. उस ज़माने के हिसाब से उनका नॉलेज बहुत ज़्यादा एडवांस था. दैट इज़ पैसेज ऑफ सन, stars, moon and planets in the sky help them to devise calendars and almanacs. These were often used by people in their day-to-day conduct and the better understanding of climate and rainfall patterns, for timely sowing and choice of crop, fixing the dates of seasons and festivals. पहले कैलेंडर्स ऐसे इस तरह से यूनिवर्स में स्टार्स और सन की जो एक्टिविटीज़ थी उनको देख के, पोजिशंस को देख के अंदाज़ा लगाया जाता था. एंड द people of that time used to they have this knowledge. Yes, so they were highly knowledgeable persons and they used their knowledge of astronomy. You can see this universe is shown in the pic, how universe में सब कुछ include हो जाता है. And the objects which exist in the sky are called celestial objects. Example: satellites, moon, planets, asteroids, comets, meteoroids, stars, all of them are known as celestial objects. Yes. Moon. The moon is the natural satellite of the earth. Moon is the closest celestial object to the earth. अर्थ के सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो है मून. एंड इट टेक्स 29.5 days फॉर मून टू रोटेट द अर्थ. मोस्टली 29.5 days, नियरली अ मंथ हो जाता है मून को अर्थ का रोटेशन लेने में, इतना टाइम लगता है. द सर्फेस ऑफ द मून इज कवर्ड विथ हार्ड एंड लूज डर्ट क्रैटर्स एंड माउंटेन्स. मून का जो सरफेस होता है वो काफ़ी सारा डर्ट और क्रैटर्स, खड्डे हो गए हैं मून के सरफेस पे, एंड माउंटेन्स काफ़ी सारे हैं. सिंस देयर इज़ नो एयर एंड वाटर, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल ऑन मून सरफेस. मून के सरफेस पे लाइफ इज़ वेरी इम्पॉसिबल बिकॉज देयर इज़ नो एयर, नो वाटर. और बिना एयर एंड वाटर के लाइफ एग्जिस्ट होना मुश्किल है. यस स्टूडेंट्स, यू कैन सी द सरफेस ऑफ मून कैसा दिख रहा है ना. दिस इज द सरफेस ऑफ मून. हाउ इज़ इट विजिबल? खड्डे खड्डे हैं, आप देख सकते हैं सरफेस पे मून के.
राइट। ये इस तरह से खड्डे हो जाते हैं, इतने बड़े बड़े क्रैटर्स हो जाते हैं। कुछ भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स अगर मून के सरफेस से टकराते हैं तो इस तरह से उसके एरिया पे खड्डे हो जाते हैं, मीन्स उसके सरफेस पे। या सो मून का जो सरफेस है बहुत ही रफ है। Now phases of moon and moon's light. We are able to see the moon because the sunlight falling on the moon reflected towards the अर्थ। हम लोग मून को क्यों देख सकते हैं? क्योंकि जो सनलाइट है वो मून पे टकराती है एंड इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ एंड सो वी आर एबल टू सी द मून। एज यू ऑल नो दैट मून डज नॉट हैव इट्स ओन लाइट। द डे ऑन विच द मून इज नॉट विजिबल इज कॉल्ड द न्यू मून डे, or the day on which the whole bright disk of moon is visible to us is called full moon day। जिस दिन पूरा मून दिखाई देता है, full moon is visible to us is known as full moon day। और उसके बाद thereafter every night the size of the brighter part of the moon appears to become thinner and thinner, thinner और thinner होता जाता है। and on the 15th day the moon is not visible at all and so we call that day as the new moon day। and the next day you will see students, on the next day only a small portion of the moon appears in the sky and this is known as the crescent moon। We call it as crescent moon। then again the moon grows larger every day and on the 15th day once again we get a full view of the moon। so we have one new moon and one full moon day during a month। पूरे month में एक full moon day आता है और एक न्यू मून डे आता है। सो दिस इज नियरली टेक्स अ मंथ। As moon revolves around the earth once every month and moves around the sun along with earth, different amounts of sunlit surface are turned towards the earth, leading to the change in the appearance of moon and formation of the phases of the moon। अब देखते हैं जो मून के शेप एंड साइज टर्न चेंज होते हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड along with earth the moon is revolving around the sun। एंड जो सनलिट सरफेस अगर अर्थ के सामने आ गया मून का, देन वी आर एबल to see only that much part of the moon। this is all because of the rotation of moon along with the earth। revolve करता है सन के चारों तरफ। अर्थ तो रिवॉल्व करता ही है, अर्थ के साथ मून भी जो है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करता है एंड मून इज ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। सो बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ moon। Now let's see the formation of the phases। Due to its revolution around the earth when it is at different position in its path, the apparent disk of the moon changes which gives rise to its phases। कैसे उसके phases बनते हैं? Means due to the different positions when it is rotating around the revolving around the earth, it's different due to the different positions the apparent disk of moon changes। moon की जो disk एक disk की तरह है round and which gives rise to its phases। when the moon is between the sun and the earth, the illuminated portion of the moon is away from the earth and we are not able to see the moon। we call this day as the new moon day। illuminated portion means जो उसका lighted portion है, sun की वजह से जो shine हो रहा है, illuminated और luminous objects हमने पढ़ा था, राइट। इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जो दूसरों की लाइट से रिफ्लेक्ट करते हैं। सो सन का जो मून का जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, अगर वो अर्थ को फेस नहीं कर रहा है देन वी आर नॉट एबल टू सी द मून। मून पूरी डिस्क की है बट उसका जो इल्यूमिनेटेड पार्ट है, जिस पोर्शन पे उसकी लाइट गिर रही है, वो अगर अर्थ को विजिबल नहीं है तो उतना पार्ट हमें नहीं दिखाई देता है। ये सो इट इज कम्प्लीटली न्यू मून डे। उसका इल्यूमिनेटेड पोर्शन हमसे दूर है और जो बाकी का डार्क पोर्शन है दैट इज नॉट विजिबल, सो इट इज न्यू मून डे। With the time, the position of moon changes and the illuminated portion of the moon exposed to the earth gradually increases। फिर उसका जो illuminated part है जिस पे सन की लाइट गिर रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है, वो धीरे धीरे सन के सामने एक्सपोज होता जाता है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि उसकी साइज इंक्रीज हो रही है। Thus, the size of the apparent disk of the moon increases gradually from a crescent to a full round when the earth lies between the moon and the sun। और इसी रिवॉल्यूशन के दौरान घूमते घूमते जब अर्थ सेंटर में आ जाती है सन एंड मून की, तो उसकी कम्प्लीटली मून का जो डिस्क है, इल्यूमिनेटेड पार्ट है, वो विजिबल हो जाता है एंड वी कॉल दिस डे एज द फुल मून डे। और उस डे को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज़ फुल मून डे।
स्टूडेंट्स दिस यू कैन सी थ्रू द फिगर ऑल्सो, ये फिगर में क्लियरली विजिबल है। आपके राइट हैंड साइड में देखिए न्यू मून डे है, उसमें जो मून जो है अर्थ और सन के बीच में है। वेन एवर मून इज बिटवीन अर्थ एंड सन, द इल्यूमिनेटेड पार्ट ऑफ द मून इज नॉट एक्सपोज टूवर्ड्स द अर्थ, सो द मून इज नॉट विजिबल टू अर्थ, सो वी से दैट इट इज न्यू मून डे। फिर धीरे धीरे जब अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, आपके टॉप राइट पे देखिए कैसे वैक्सिंग क्रीसेंट, वैक्सिंग वेनिंग क्रीसेंट, फिर इस तरह से बढ़ती जाती है एंड इट बिकम्स फुल मून डे। यस, फुल मून डे के बाद आप लेफ्ट साइड में देखेंगे डाउनवर्ड की तरफ फिर से मून की जैसे पोजीशन चेंज होती है, मून का जो विजिबल पार्ट है वो कम होता जाता है एंड अगेन इट कम्स टू न्यू मून डे। सो दिस इज द सर्कल गोइंग ऑन व्हेन द अर्थ इज बिटवीन द सन एंड मून। देखो आप राइट साइड में देखेंगे तो मून है सन और अर्थ के बीच में, और लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अर्थ इज बिटवीन सन एंड मून, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू सी द डिफरेंट फेजेस ऑफ मून। एंड स्टूडेंट, द वेरियस शेप्स ऑफ द ब्राइट पार्ट ऑफ द मून एज सीन ड्यूरिंग अ मंथ आर कॉल्ड phases of the moon, and phases of the moon play an important role in our social life। हमारी सोशल लाइफ में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। You know, almost all the festivals in India are celebrated according to the phases of the moon. For example, Diwali is celebrated on the new moon day, Buddha Purnima and Guru Nanak's birthday are celebrated on full moon day. Mahashivratri is celebrated as the 13th night of waning moon. Waning means कम होता हुआ। Yes, वेनिंग जिसे हम कहते हैं उसका वो कम होता जाता है, दैट इज 13th नाइन्थ ऑफ वेनिंग मून। ईद उल फितर इज ऑब्जर्व्ड ऑन द डे फॉलोइंग द साइटनिंग ऑफ क्रिसेंट मून। जिस दिन फर्स्ट मून हमें दिखाई देता है जिसे हम क्रिसेंट मून कहते हैं, उसके नेक्स्ट डे पे ईद को सेलिब्रेट किया जाता है। एंड द टाइम पीरियड बिटवीन वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज स्लाइटली लॉन्गर देन 29 days. In many calendars this period is called a month. So this period of full moon day, between full moon day and one full moon day to next full moon day, on one new moon day to next new moon day is around a month. So we consider it as a month, that is 30 days का जो month period होता है। Students, related to this there is one activity in your textbook, activity 17.2. it's very easy, आप उसको go through करेंगे, खुद ही read करेंगे तो आपका ये मून का जो एक्टिविटी है इसमें एक्सप्लेन किया गया है कैसे फेसेस बनते हैं मून के। ये so this activity you will be doing by yourself, you all have to do, and remember that the moon revolves around the earth and the earth along with the moon revolves around the sun. So you can see why these positions are taking place. The size of the illuminated part of the moon visible from the earth increases each day after the new moon day, and after the full moon day the sunlit part of the moon visible from the earth decreases in size every day. So this is clear from the figure, and the activity related to this you will be doing from your textbook. Yes students, now next our topic is about stars. Stars are also known as the celestial objects that are extremely hot and have light of their own. They have their own light, they don't need the light of sun, as in case of planets and moon. The stars appears to be small because they are very very far away from us. Students, you all are familiar with this, because they appear very small because they are very far from us. Yes, बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। The sun is the star which is nearest to the earth, and the sun looks much bigger and brighter because it is much nearer to us than any other star. sun को हम ज़्यादा brighter देख पाते हैं because sun itself is a star. वो हमको छोटा नहीं दिखता है because it is very very near to the earth. The sun is nearly 150 million kilometer away from the earth, and the next nearest star is Alpha Centauri. It is at a distance of 4 and so many zeros kilometer away from the earth, that is something 40 millions or something like that, or 4 lakh million. Can you read this distance in kilometers conveniently? See in your textbook there is one information given. Some stars are even further away from that. Such large distances are expressed in another unit known as light year. For that light year is used, and it is distance traveled by the light in 1 year. And remember that the speed of light is about 3 lakh kilometers per second. Thus the distance of the sun from the earth may be said to be about 8 light minutes, and the distance of Alpha Centauri is about 4.3 light years from the earth.
Yes, students, though the stars are present in the sky even during the daytime, but we cannot see them during daytime because of the bright light of the sun. Sun की वजह से हमें stars visible नहीं होते, but stars remain there, their position remains same. They are there in the sky, they do not vanish, but because of the sunlight, we are not able to see them. The stars appear to be moved in the sky from east to west direction. This apparent motion of the stars in the sky from east to west is due to the rotation of earth from west to east on its axis. Stars हमेशा east to west move करते हुए होते हैं because जो earth का जो rotation है, this is apparent motion of the stars because earth is rotating from west to east on its axis. इसलिए हमें जो stars है वो किस direction में move होते दिखते हैं, from east to west. Like sunrise हमेशा हम लोग को east में दिखता है और sunset west में दिखता है because हमारी जो earth है वो west to east में रोटेट कर रही है, इसलिए सब कुछ उल्टा जाता हुआ दिखता है. ऐसा कभी ट्रेन्स वगैरह में देखे ना, अगर आप आगे जा रहे होते हैं तो पेड़ हैं, माउंटेन्स हैं, सब आपको पीछे जाते हुए दिखेंगे. द सेम इज द case with earth and moon and others, earth, sun and other stars. As earth rotates from west to east, we feel that all the stars including sun are rotating from east to west. Yes, students, next is pole star. The star which appears stationary from the earth is called pole star. जो मूव करता हुआ हमें नहीं दिखता है. एक्चुअली स्टार्स मूव नहीं करते हैं, बिकॉज अर्थ मूव करती है तो हमें स्टार्स की पोजीशन चेंज होती हुई दिखती है. तो जो स्टार हमें स्काई में हमेशा एक ही पोजीशन में आपको मिलेगा उससे हम पोल स्टार कहते हैं. We cannot see it moving, we cannot see its changing position. Why? क्यों ऐसा हमको नहीं मूव करता हुआ दिखता है? Because the pole stars appear to be stationary and does not change its position with time because it lies on the axis of the rotation of the earth, which is fixed in the space and does not change with time. अर्थ का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, सेंटर है, अर्थ के सेंटर पे उसकी पोजीशन है. अर्थ भले ही रोटेट करता जा रहा है, अपने एक्सिस पे रोटेट करता है, बट सेंटर वहीं पे रहता है. सी वन एक्टिविटी इज गिवन टू यू टू एक्सप्लेन दिस. That is activity 17.5. There is one umbrella. They have taken one umbrella shown in your textbook. Please open your textbook. I will read the activity. Take an umbrella and open it. Make about 10 to 15 stars out of white paper and paste one star on the position of the central rod of the umbrella and others at the different places on both on the cloth near the end of each spoke. आप अम्ब्रेला देख सकते हैं, फिगर में आपको टेक्स्ट बुक में दिखाई गई है. हर एक अम्ब्रेला के चारों तरफ आप स्टार्स लगा दो और एक स्टार आप उसकी रॉड पे लगा दो, अम्ब्रेला की जो सेंट्रल रॉड होती है ना. एंड देन यू रोटेट द अम्ब्रेला बाय होल्डिंग इट्स सेंट्रल रॉड इन योर हैंड. Observe the stars on the umbrella. Is there any star which does not appear to move? You will see that is the star which is located on the rod. बाकी सारे stars आपको move करते हुए दिखेंगे क्योंकि umbrella को हम rotate कर रहे हैं. But जो हमने rod पे star लगाया, it will not move because it is at the center. If there were a star located where the axis of the rotation of earth meets the sky, could this star also be stationary? So in the same way, pole star appears to be stationary. There is actually a star, that is pole star, which is situated in the direction of the earth's axis and it does not appear to move. That is the reason we cannot see it moving. You can see in the figure also. Here this shown in the figure, pole star देखो अर्थ के एक्सिस पे दिखाया गया है. अर्थ का जो रोटेशन एक्सिस है, ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अर्थ का जो ये रोटेशन एक्सिस है, यहाँ पे पोल स्टार दिखाए गए अर्थ के एकदम सेंटर में है. तो अर्थ भले इस डायरेक्शन से मूव करता होगा, रोटेट करता होगा, बट उसका एक्सिस अर्थ का इधर ही रहता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन नॉट सी द मोशन ऑफ पोल स्टार. पोल स्टार मूव करता हुआ नहीं दिखता है. आई थिंक दिस इज विजिबल टू यू. यस, दिस इज द पोजिशन ऑफ पोल स्टार. द पोल स्टार लाइज क्लोज टू द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ. यस स्टूडेंट्स. So students, here we end the first part of the chapter number 17. Next topics we will be covering in our next video. Yes, here we conclude this video. Thank you. Stay safe. Keep learning.